we have the trust-based governance. Now see, first of all, when we say trust-based governance, that means trust in legislations of country, trust in effective contract enforcement, by quasi-judicial एंड जुडिशियल सिस्टम. जैसे अभी जीएसटी ट्रिब्यूनल बनने की बात है, जैसे हमने एनसीएलटी बनाया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट्स फंक्शन करें, तो इनसे पता चलता है कि ट्रस्ट बने या ना बने. यू नो, दैट इज द आइडिया. Okay, I see one question from you that for an e-shram portal are not appropriate. For example, many who are unemployed or do not do nothing, registered in category of agriculture, etc. No, Naveen, समझना इस बात को. Those who are unemployed are registering themselves in the category of agriculture or small tutors or small workplace workers because they are not satisfied with the employment. That's unorganized sector workers. Unemployed है क्योंकि वो उसमें काम नहीं करना चाहते जिसमें करने को मिल रहा है. उससे भी हमें एक डेटा मिलता है कि कौन से तरह की नौकरी दिलवाएं लोगों को ताकि ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके. I hope Naveen you will get the point I am making. So no harm in that. Also think of it, even if out of 28 crore people who are there, even if 3 crore are like this, you have some real-time information on 25 crore people. So we should not throw the baby out with the bathwater. You know, ये important है. बच्चे को नहलाया तो पानी फेंकिए, बच्चे को नहीं. तो दिक्कत अगर आ रही है पानी की वजह से तो पानी को हटाने की सोच सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को फेंकने की बात करते हैं अगर हम कहते हैं ई-श्रम पोर्टल इज नॉट गुड. सो यू कैन से दैट ओके, डिफिकल्टी तो हर जगह होगी. अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो कुछ बातें हो सकता है 90% समझ भी पाए, 10% नहीं समझ पाए, तो दोबारा यूट्यूब देख के समझ लोगे. पर कहोगे बकवास है, नहीं पढ़ूंगा, तब तो कुछ भी नहीं समझोगे ना. तो इसीलिए कह रहा हूं दैट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए दैट इफ समथिंग इज क्रिएटिंग बेटरमेंट एंड इफ समथिंग इज इंप्रूविंग द सिचुएशन कंपेयर्ड टू व्हाट वाज, then that should be done. ये हमेशा golden rule policy के याद रखोगे. If what is better than what what is good. You know, nobody can match ideal world. आप याद करो हम 12th में होते थे, 10th में होते थे. मैं जब 12th में था ये मेरे साथ होता था. मैं पढ़ाकू बच्चों में से एक था. घर लौट के आता था, टीवी खोल दिया, मदर आ जाती थी, बोलती थी तुम्हारे उम्र के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं. मैं सोचता था कौन है ये बच्चा भाई जो मेरी उम्र का है और पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला तो मैं हूं. फिर रियलाइज किया ये बच्चा है आइडियल वर्ल्ड वाला बच्चा जो 24 घंटे पढ़ सकता है. सो इफ यू कंपेयर एनी पॉलिसी टू आइडियल वर्ल्ड तो वो 24 घंटे पढ़ के दिखा देगा ना, उसको कैसे जीतोगे. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमें समझना दैट देयर विल बी ग्लिचेस, देयर विल बी ट्रबल, बट विथ लेट्स ट्राई फाइंडिंग एडवांटेज आउट ऑफ दैट एंड देन गेटिंग अ सॉल्यूशन फॉर इट. आई होप इट विल गिव यू अ बेटर इंसाइट on things per se. Now see, yes, a comparative idea is what we are trying to do here, and then what has been done in the last 8 years. Then what is this trust-based confidence? Efficiency in investors' confidence. That is, investors should be confident that sudden law changes will not happen. जैसे 2021 में government removing retrospective tax burden, ये एक अच्छी बात है. ये करने से आप इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस कर देते हो कि आप चिंता मत करो, आपके ऊपर उल्टा पुल्टा रूल नहीं लगाया जाएगा, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाएगा, सिंगल विंडो दिया जाएगा. और इसी के लिए अगर तुमने मेरे बजट की डिस्कशन देखी तो इसी के लिए मैं कभी कभी हमारे अभी के सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं कि अनाउंसमेंट कर देते हैं फिर उस पर वर्क नहीं करते. 2 बैंक प्राइवेटाइज होंगे, किया नहीं. बीपीसीएल प्राइवेटाइज होगा, किया नहीं. तो ये जो हम करते हैं ना, ये हमें शायद थोड़ा बचना चाहिए. वी शुड नॉट मेक अनाउंसमेंट्स अनलेस वी आर नॉट सर्टेन. दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर एफिशिएंसी इन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. वो ट्रस्ट को हिलाता है. और ये मैंने तुम्हें प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल दिया क्योंकि मैं दे चुका हूं बजट में. और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे अगर अडानी को लेकर इतना अप्रोर था, गवर्नमेंट कुड हैव गॉन फॉर अपॉइंटिंग एन इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी टू चेक इफ समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड. उससे ट्रस्ट बनता है लोगों में.
That is the idea. Then better ease of doing business, that is by simplification of rules, improvement of legal mechanism, improvement in retrieval, कि अच्छा ठीक है कहीं फंस गए हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो रिप्रीव कैसे मिले, मान लो कोई गलती हो ही गई, मैं टैक्स पे करना भूल गया तो कम से कम मुझे कुछ पेनल्टी देना चाहिए कि ठीक है पे कर सकते हो, ये नहीं कि मैं सीधा जेल चला जाऊंगा या मुझ पे केस आ जाएगा ट्रिब्यूनल से, ये सब ना हो अगर, दैट इज बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. मोर इफेक्टिव गवर्नेंस इज हाउ यू आर डिलीवरिंग योर गवर्नेंस, और इसीलिए आपके जो लास्ट माइल डिलीवरर्स हैं, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, पटवारीज, people working on the ground, ये बहुत जरूरी लोग हैं, because that is your better governance. I can make a policy sitting in North Block or sitting in South Block, but somebody got to implement it on the street out there in a village, and that person will be the secretary to the village panchayat. These are all government appointed bureaucracy people, जो lower level bureaucracy में हैं. तो अगर ये लोग अच्छे से काम करने लग जाएं और इनको guidelines मिले ऊपर से, like say the deputy secretary, the district magistrate and so on, then the ease of doing business improves, and that will result in more effective governance and ease of doing business coming together and developing India. सरकार का यही काम ही है, governance, govern करे तरीके से और वो governance implement हो ठीक से, and that is why lower level bureaucracy has a very important role to play in such activities. Then of course we talk about what are the reforms that the government has taken in the last 8 years. Economic survey goes about that what are the reforms that have been taken. Insolvency and Bankruptcy Code Act was passed in June 2016 and it was implemented from June 2017. So last 4-5 years we have done better there. When we say honorable exit mechanism for honest business failure, अब मान लो कोविड पैंडेमिक आ गया, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक लग गया, सडनली ऑयल के प्राइस गिर गए और मेरा बिजनेस ऑयल का ही था, तो मैं बिना मेरे ज्यादा गलती के नुकसान में आ गया हूं. अब आइडियली मैं क्या चाहूंगा, जल्दी से मेरा बिजनेस बंद हो, मैं निपटारा करूं, वर्कर के ड्यू पे करूं, क्रेडिटर के ड्यू पे करूं, जो कैपिटल बचता है निकालूं और कहीं नया बिजनेस शुरू करने की सोचूं. लेकिन अगर मेरे लॉ ऐसे रहेंगे जो मुझे 8-10 साल के लिए फंसा के रख लेंगे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा. So if I get a law which can release myself quickly, if I have made a loss, then I will be much better off when it comes to doing business in any country. So this improves ease of doing business. If I have made an honest loss, I have made an honest failure, if I am not a willful defaulter, I want to exit, I will have confidence, okay, there is a time-bound method by which I can exit. Because in Insolvency and Bankruptcy Code, the defaulter has the criteria, they can renegotiate their insolvency, talk for 6 months, extendable to 9 months, reach a conclusion, and then plan their insolvency accordingly. Also, as I just told you, credit locked into stressed assets. जब तक कंपनी का निपटारा नहीं हो रहा, अब उसके एसेट भी नहीं बिक रहे, उसकी जमीन भी वैसी ही फंसी हुई है, मशीन फंसा हुआ है उस कंपनी में, लेबरों को पता नहीं कि पैसे मिलेंगे, नौकरी बची या गई, क्या हुआ. So Insolvency and Bankruptcy Code speeds that up and makes sure that the resources are released quickly and from the stressed assets that they had become. Of course, it is market driven because all auctioning will happen in the market. Company will be sold in the market. So chances that there will be a forcible selling or any quid pro quo between government officer and businessman, all that gets minimized. And that attracts new investors because they are happy that now there is ease of exiting the business. So in case I am doing any mistake and I make a loss, I will not get stuck up in the country. So that is the benefit that we talk about of Insolvency and Bankruptcy Code. ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे दूसरी बात करता है रेरा की, that is Real Estate Regulation Act. Now RERA again is something quite good. 2017 it was passed. जो भी हमारे हौच पौच हो रखा था रियल एस्टेट बिजनेस में, इधर का पैसा उधर लगा देते थे, एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते थे, उसका आधा बिल्ड करते थे और उसके जो पैसे आ रहे हैं दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करके उस पर लगा देते थे, अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके पैसे खा जाते थे. सरकार ने इसको ठीक किया. Until you don't have clarity of land, you can't build and construct. All the money that you are taking for construction of a project will have to go to an escrow account meant for that project only. All buyers will have to be taken into confidence if any change is brought about in the construction program.
इससे क्या हुआ, बायर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है मेरी भी चलेगी, और अब मैसेज मिल गया बिल्डर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को कि मैं धोखा दूंगा तो रेरा के एक्ट के अंदर में मुझे सजा मिल सकती है, मेरे प्रोजेक्ट बंद किए जा सकते हैं. सो दिस वाज अ बेनिफिट पार्ट. दैट इज व्हाई कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी in real estate, registering real estate broker agents that helped in making sure black money can be controlled, and mechanism for speedy redressal of dispute. अगर buyer में और seller में कोई dispute है, they can go under RERA and go to the tribunal NCLT, try getting it resolved. And then single window clearance for timely approval of all projects, and every state government has to establish its RERA office where this single window clearance can be given. But few problems persist. अब ये सर्वे हमें नहीं बताता पर हमें पता होना चाहिए. Few problems persist. One, lack of clarity of land holding. ये एक प्रॉब्लम परसिस्ट करता है. किसकी जमीन कौन सी है, दिस इज ओनरशिप राइट, इस पर अभी भी प्रॉब्लम है. दैट इज वन. सेकेंड, लैक ऑफ प्रॉपर लॉ फॉर लैंड पूलिंग. अगर कुछ लोग मिलकर अपना लैंड एक जगह पूल करना चाहते हैं, उसके लिए अभी भी हमारे यहाँ कानून सही नहीं बने हुए हैं. सही मतलब proper rules, regulations, well established, clarity of language, so that people can be confident that I can enter into contract with some others, 10, 12 people can come together. If everybody has 1 acre land, now it becomes a 12 acre land pool and business can be promoted like that. ये manufacturing development के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ real estate के लिए नहीं. Then the third thing we still see is lack of स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. लैंड के डिस्प्यूट में आप एक बार फंस गए तो आपका ग्रैंड चाइल्ड जो है वो उसका निपटारा देख लेगा. ये हमारे यहाँ की दिक्कत है, तो उससे लोग डरते हैं अभी भी. लैक ऑफ स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, सो नोबडी वांट्स टू देन ट्रांजैक्ट इन लैंड. दैट बिकम्स द चैलेंज फैक्टर दैट कम्स इन. तो ये एक प्रॉब्लम है, ये रेरा के जो दिक्कतें हैं रेरा के बाद भी वो देखने को मिल रहा है. And of course, government will have to bring legislative reforms to improve upon it. ये sensitive issue बन जाता है क्योंकि जैसे ही आप legislative reform लाएंगे, आपके opposition बोलेंगे ये सूट बूट की सरकार है. So that becomes a problem part. But you do need legislative reforms to overcome these issues. This is very important. ये मैं तुम्हें बजट में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. But this is decriminalization of economic offenses under Companies Act 2013. तो अब सिविल लाइबिलिटी लगेगी फॉर सिंपल डिफॉल्ट एंड नॉट क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो लोगों का जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो सब खतरा नहीं है. तो कॉन्फिडेंस होगा कि बिजनेस करें. नहीं तो लोग डरते थे कि कोई निर्णय लेंगे, कोई गलती हो गई, सीधा जेल जाने की नौबत आ जाएगी. सो दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन गुड. Another is 1400 default cases have been settled outside the court because of simplification of laws, and 4 lakh companies have been reforming themselves, correcting their problems on their own. They have recognized that we have done defaults in the past. Now the laws have been changed. Now we are willing to accept those defaults, accept the problems and rectify our situation. These are all good decisions that we have taken. This is all you can write in ease of doing business. ये सारे आंसर लिख सकते हो. अगर कोई पूछते हैं what has the government done for ease of doing business, ये बातें आ सकती हैं उसमें. Then the next thing is we have changed the taxation ecosystem. You know, first is unified GST, that is reduces cascading effect, promotes formalization, improves movement along states. पहले लोग जानबूझ के उन्हीं स्टेट्स में अपने वेयर हाउस बनाते थे जहां प्रोडक्शन होता था, क्योंकि इंटर स्टेट मूवमेंट पे टैक्स लगता था. अब लोग अगर मानते हैं कि प्रोडक्शन एक स्टेट में करूं, वेयर हाउस दूसरे स्टेट में बनाऊं, IGST दे दूंगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा. तो GST ने ये इंप्रूवमेंट दिया लोगों को. सो विद GST बेटर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डेवलपमेंट, improving movement along the state, the taxes on state border have been removed, it has been brought under GST.
It promotes formalization of the economy per se, because now everyone has to register themselves under GST. Similarly, reducing corporate tax rate, इसकी चर्चा बजट में कर चुका हूं तो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखना पिछले 4 सालों में 2019, 22, 23 और 23, 24 corporate tax rates have gone up by 3 lakh crore. Income tax rate has gone up by 1.3 lakh crore. 4-4.5 लाख करोड़ का तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जबकि इतने से जीडीपी नहीं बढ़ी इस प्रोपोर्शन में. So that is tax buoyancy in corporate tax rate and income tax rates that we have done. So reducing corporate tax rate, इनके 3 advantages हैं. Better tax collection, incentivizes investment, and promotes better confidence due to rational tax. That is, giving people rationality. You don't have to do efforts to get exemption. Government allows you 22% tax rate if you are not taking any exemption. So that is the basic understanding there. Then we go further. The next part is, which I was just telling you, buoyancy of GST has been higher than the old regime. Corporate tax collection has increased on year-on-year basis. Tax collections have been high. As I told you, tax collections have increased. Tax collection has increased from 14 lakh crore in 2017-18 to 23 lakh crore by 2022-23. So there is something interesting that we are looking at, that we are having some high tax collection at the moment. Compliance has improved. More people are now reporting tax. जब GST की शुरुआत हुई थी तो उस समय में there were 70 lakh people who were registered under it, 7 crore people who were registered under it. Now there are 14 crore people who are registered under it. Now that shows some improvement in 70 lakh people registered under it, and now 1 crore 40 lakh people registered under it. That shows some improvement in GST. You bear with me, I mixed up between millions and lakhs. Now next is, it is improving fraud detection, because with GST, with e-tax payments, there is a trail which is getting created. आपने एक जगह टैक्स दिया, रिकॉर्ड हो गया. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBDT एंड CBIC, ये दोनों में इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज होता है. तो इनको एक पोर्टल पे लाया गया, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो रियल टाइम डेटा मिल जाता है कि अच्छा ये एक तरफ डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तो इनकी कंपनी से इतना जा रहा है. तो उनको ट्रेस किया जा सकता है कि भाई तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे पास से. सो दैट इज इंक्रीजिंग कंप्लायंस एंड इंप्रूविंग फ्रॉड डिटेक्शन. And then there is faceless assessment system, in which case there is no physical interaction, and that results in reducing tax evasion, removing corruption. People will have at least make sure that you don't meet your tax inspector, and that means it is done facelessly, and assessment is better, plus corruption can be controlled.